हो गई। हाँ सही है। जी स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। जी सर। सर। यस सर। चलो ठीक है। एक मिनट मैं जरा स्क्रीन को चेक कर लूं खुद ही। It's okay. ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की बात होगी। तो वी टॉक अबाउट कूलम्स लॉ। We consider two charged particles, Q1 and Q2. These are two charged particles. The position vector of Q1 is R1. The position vector of Q2 is R2. And this is the distance vector, which is represented by R12. And here is the unit vector AR, right? So we know that there will be a force of repulsion on Q2, and there will be a force of repulsion on Q1 if they are light charged particles. So we know that the force on the second charged particle due to the first one will be equal to Q1 into Q2 divided by 4 pi epsilon. Let's say the magnitude of this vector is represented by R12, and this force of repulsion will be in the direction of the unit vector AR. So this is how we calculate the force on this charged particle due to the presence of Q1, right? We know that the unit vector AR will be equal to R12, the vector R12 divided by the magnitude of this vector. So if I put the value over here, F2, the force on the second charged particle will be equal to Q1 into Q2 into R12 divided by 4 pi epsilon R12 raised to power 3. So we can calculate the force on this charged particle due to the presence of this one, either with the help of this equation or with the help of this particular equation. You see, you guys can write down R12 in this form as well. If you look at the geometry, R12, this distance vector will be equal to R2 minus R1. So R12, the magnitude of this vector will be represented by this notation. This is how we represent the magnitude of this distance vector. So if I put the values in this particular equation, what do I have? I have Q1 into Q2 into R2 minus R1 divided by 4 pi epsilon, and then I have R2 minus R1 raised to power 3. So this is how we calculate the force on Q2 due to the presence of Q1 in accordance with Coulomb's law. And if you guys want to calculate F1, then F1 will be equal to minus F2. This is how we calculate F1. So this is Coulomb's law, and I have explained, you see, Coulomb's law in detail in the video. So please go through the video and try to learn this particular topic, right?
आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. So then we discussed the electric field intensity. Electric field intensity is a force, and this is a force per unit charge. So the force per unit charge is known as electric field intensity. So let us consider, you see, a charged particle of Q coulomb over here, and the position vector of this charged particle is R1, and then we consider the point under observation over here, right? So we consider this particular diagram. The position vector of the source is R1, the position vector of P is R, and this is, you see, the vector. This is the vector which is extending from the source to this particular point. If you guys want to calculate the electric field intensity at point P, so the electric field intensity at point P will be the force per unit charge. You know that this electric field intensity will be the force per unit positive charge at this particular point, right? So we can calculate the electric field intensity at the point under observation with the help of this particular equation. You see, this is how we calculate the electric field intensity at this particular point, which is caused by this particular source. So the electric field intensity will be equal to Q by 4 pi epsilon R square into AR. You know that this unit vector AR will be equal to vector R divided by its magnitude. So if you put the value of the unit vector AR in the first equation, you guys will get Q, which is the magnitude of the charge on the source, multiplied by R, and then you guys will have 4 pi epsilon R cube. So you guys will get this particular equation. So you guys can calculate the electric field intensity at this particular point, either with the help of this particular equation or with the help of this particular equation. There is no difference between these two equations. If you look at this diagram, R will be equal to R minus R1. So the distance vector will be equal to R minus R1. The magnitude of the distance vector will be equal to the magnitude of the distance vector will be equal to this particular notation. So if I put the value of this vector R over here, so I have the magnitude of the charge on the source, which is basically Q, into R minus R1, which is the vector which is extending from the source to the point under observation, divided by 4 pi epsilon R minus R1 raised to power 3. So you see, if you guys want to calculate the electric field intensity at this particular point, this electric field intensity is caused by this particular source. So you guys can calculate the electric field intensity at this particular point either with the help of this equation, or with the help of this equation, or with the help of this equation. You guys can use any one of these three equations to calculate the electric field intensity, right? Yes, sir. Yes, sir. Shall I? Now, let us consider a line charge, right? You know that what is a line charge? Yes, sir. So let us consider the electric field intensity due to a line charge. So if we have a line charge, then definitely we consider that the charge is uniformly distributed along this line. We assume that the total charge of the source is Q coulomb and the total length of the line is L. So the charge of this particular source is Q coulomb and the length of this source is L. What we do, we consider a very small portion of the source over here. So we consider a very small portion of the source over here.
we assume that the length of the small portion is dl and the magnitude of the charge on the small portion is dq. And we consider the position vector of the small portion. So the position vector of the small portion is represented by r1. And then we consider a point over here. We want to calculate the electric field intensity at this particular point. And the position vector of this point is represented by r. So here is the vector which extends from the small portion of the source to the point under observation, which will be r minus r1. Okay, so this is a line charge, and we want to calculate the electric field intensity at this particular point, and the electric field intensity at this particular point will be caused by the line charge. We know that the line charge density rho L will be equal to the total charge of the source divided by the length of the source. So you guys can calculate the line charge density of the source with the help of this particular equation. Or you guys can calculate this line charge density with the help of this particular equation as well, dq by dl. dq is the magnitude of the charge on the small portion, and dl is the length of the small portion of the source. If you look at this particular equation, so dq will be equal to rho L dl. This is how we calculate the differential charge on the small portion of the source. And if you guys want to calculate the total charge of the source, you guys need to integrate this particular equation. So the integration of this particular equation will give you the total charge of this particular source, right? So in order to calculate the electric field intensity at this particular point, we calculate the electric field intensity due to the small portion of the source first. And you see the magnitude of the charge on the small portion is dq, right? So definitely the differential, this will be differential intensity. So we have the differential intensity at this particular point. And the differential intensity at this particular point will be due to dq. All right. And you guys can use this particular equation, or you guys can use, you see, this particular equation. So the differential intensity will be equal to dq into r minus r1. We have r minus r1, which is the vector extending from the small portion of the source to the point under observation, divided by r minus r1 raised to power 3. So this is how we calculate the differential intensity at the point under observation. And this differential intensity is caused by the small portion of the source. So if you guys want to calculate the total intensity, for the total intensity, you guys need to integrate this particular equation. So integrate this equation and you guys get the total intensity. Well, what you guys can do, you guys can put the value of dq over here. And what is the value of dq? The value of dq will be rho L dl, right? So if I put the value of dq over here, and if I integrate this particular equation, I will get the electric field intensity. So I put the value of dq, which is rho L dl, and then we consider the vector which extends from the small portion of the source to the given point, divided by 4 pi epsilon, and then I have r minus r1 raised to power 3. This is r1. So ये क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you guys have a line charge, and if the line charge density of the source is known, and if you guys are asked to calculate the electric field intensity at a point which is caused by a line charge, so you guys will use this particular integration. This integration will give you the total electric field intensity at this particular point. Now let us consider a surface charge. So इस डायग्राम को हम जो है ना थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. So let us assume that we have a surface over here. Let's say this is a surface, and we assume that the charge is uniformly distributed over this particular surface.
the total charge on the surface is q coulomb, and the total area of the surface is S. And what we do, we consider a surface charge over here. We assume that the charge is uniformly distributed over this particular surface. The total charge of the surface is Q. The area of the surface is S. You see, this is the small portion of the source. The area of the small portion is ds. The magnitude of the charge on the small portion is dq. R1 is the position vector of the small portion. R is the position vector of this point, and R minus R1 is a vector which extends from the small portion of the source to this particular point. So now the surface charge density, इस equation को देखें, you guys can calculate the surface charge density of the source. What is surface charge density? It is charge per unit area. So if you know the total charge, if you know the total area, you guys will calculate the surface charge density of the source. With the help of this particular equation, the unit will be coulomb per square meter. Or you guys can calculate rho s with the help of this particular equation, dq divided by ds. Consider the small portion and divide the charge of the small portion by the area of the small portion, and this will give you the surface charge density. So if you look at this particular equation, the differential charge will be equal to rho s ds. So this is how we calculate the differential charge on the small portion of the source. If you guys want to calculate the total charge of the source, integrate this equation. So the integration of this equation will give you the total charge of the source. So this integration will give you the total charge of the source. Now, if you guys want to calculate the electric field intensity at this particular point, you guys need to consider the small portion of the source first. The magnitude the magnitude of the charge on the small portion is dq. So definitely the intensity at this particular point due to the small portion will be differential intensity. So this is how we calculate the differential intensity. We have dq into r minus r1 divided by 4 pi epsilon, and then we have r1 minus r3. So this equation is used to calculate the differential intensity at this particular point. And you guys need to put the value of dq now, which is rho sds. तो यहाँ पे आप लोग dq की value put करेंगे. So dq will be equal to rho sds now. So if you put the value of dq over here, and if you integrate this particular equation, the integration of this particular equation will give you what? The total intensity at this particular point. So now dq is rho sds. dq is rho sds. So we put the value of dq in this particular equation, and then we integrate this particular equation, and the integration gives you the total electric field intensity at this particular point. So this integration will give you the electric field intensity at this particular point, and this integration will give you the total charge of the source, right? Yes, sir. Okay. Then we consider the electric field intensity, due to a volume charge. So यहाँ पे हम क्या करते हैं? We assume that the charge is uniformly distributed in a volume. So we assume that the charge is uniformly distributed in a volume. So we consider a volume over here, and we assume that the charge is uniformly distributed in this particular volume. So we assume that the total charge inside this volume is q coulomb. The total volume of the source is V. We consider a very small portion of the source. The volume of the small portion is dV, and the magnitude of the charge on the small portion is dq. तलहा को निकालो. तलहा अब्दुल्ला, तुम नोट नहीं कर सकते. म्यूट कर दिया उसको. So the volume of the small portion is dV, and the magnitude of the charge on the small portion is dq. R1 is the position vector of the small portion. R is the position vector of this point, and definitely R minus R1 is the distance vector
which is extending from the small portion of the source to this particular point. So this is the volume charge now. The charge is in the form of a volume. The charge is uniformly distributed inside a volume. So we define the volume charge density of the source now, which is the charge per unit volume. So what we do, we divide the total charge of the source by the total volume. This division will give you rho v, which is the volume charge density. Or you guys can calculate the volume charge density with the help of this second equation, the differential charge divided by the differential volume. So the charge on the small portion of the source divided by the volume of the small portion of the source will give you rho v. So we can calculate dq from this particular equation. dq will be equal to rho v into dv. So if the volume charge density of the source is known, you guys can calculate the differential charge inside the small portion of the source. Integrate this equation. The integration of this equation will give you what? It will give you the total charge. So we integrate this particular equation. The integration of this particular equation will give you the total charge of this particular source. So this integration will give you the total charge of the source. और ये याद रखें कि this is not a simple single integration. यहाँ पे differential volume involved है, and differential volume in the rectangular coordinate system is dx, dy, dz. तो यहाँ पे 3 variables होंगे. So basically ये triple integration होगा. You guys will have to integrate it with respect to x, then with respect to y, then with respect to z if the volume is in rectangular coordinate system. Similarly, it will be triple integration in the cylindrical coordinate system as well. It will be triple integration in the spherical coordinate system as well. Anyhow, we calculate the total charge of the source with the help of this particular equation. Now we want to calculate the intensity at this particular point. The intensity which is caused by this particular source. So we follow the traditional method. What we do, we consider a very small portion of the source over here. The volume of the small portion is dV, and the charge inside the small portion of the source is dq. And we calculate the differential intensity at this particular point. The differential intensity will be caused by the small portion of the source. So this is how we calculate the differential intensity. This differential intensity at this particular point will be caused by this charge. This charge is differential charge. So we consider the differential charge, then we consider the vector which extends from the small portion of the source to the point under observation divided by 4 pi epsilon, and then we have r minus r1 raised to power 3. This is basically the magnitude of this vector. So now we know that the differential charge in this particular case will be equal to rho v into dv now. You see, look at differential charge. The differential charge will be equal to rho v dv. तो यहाँ पे differential charge की value put करें, और differential charge की value put करने के बाद इस equation को integrate करें. So we put the value of the differential charge in the first equation. इसको आप first equation का नाम दें. इसमें differential charge की value put करें, and then integrate this particular equation. So you guys will get this integration, and this integration will give you the electric field intensity at this particular point, and this electric field intensity is caused by the volume charge. ठीक है जी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद जो हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज कंसीडर किया था. Yes, sir. We consider the infinite line charge. So how do we calculate the electric field intensity at a given point due to an infinite line charge? जहां तक derivation का ताल्लुक है, I have explained the derivation in the video. So please watch the video and try to understand. You see the derivation. Anyhow, I will Excuse just me, sir. consider. जी. सर इधर एक स्टेप में थोड़ा मुझे समझ नहीं आया. इधर हम जब भी एंगल लेंगे तो हमने z एक्सिस के साथ लिया था, ये हम y एक्सिस के साथ ले सकते हैं ये एंगल. कौन सा एंगल? और हाँ, सर ओके, जब ओके. हम
आप z एक्सिस के साथ एंगल ले सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर मतलब आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है? यस सर, जब हमने ये कैलकुलेशन किया तो आपकी वीडियो में ds की dz की वैल्यू माइनस p कोसेकंड स्क्वायर dt थीटा आया, और फिर उधर एक स्टेटमेंट था व्हेन z इट्स नॉट p, इट्स रो। यस सर, फिर हाँ आपने कहा कि if z equal to minus infinity then theta will be pi and when z is infinity then theta will be 0। तो जब हम ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं तो सर ये लिमिट इस तरह आना चाहिए कि नीचे पाई ऊपर 0 होना चाहिए, वो माइनस साइन भी गायब हो गया, तो ये किस तरह सर हो गया, ये लिमिट चेंज हो गई? वो वहां पे हम माइनस साइन को मैंने इग्नोर किया था। माइनस साइन आ रहा था ना? यस सर। माइनस साइन आ रहा था। जी सर। माइनस साइन आ रहा था तो मैंने माइनस साइन को इग्नोर किया, और आप माइनस साइन को तभी इग्नोर कर सकते हैं जब इंटीग्रेशन के लिमिट्स को आप चेंज करें। जब इंटीग्रेशन के Yes, लिमिट्स sir. को आप चेंज करते हैं तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आता है। तो आपके पास एक माइनस साइन पहले से आया था, एक माइनस साइन आपके पास आया इंटीग्रेशन के लिमिट चेंज करने की वजह से, तो आपके पास प्लस साइन आया। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। आप एंगल मतलब उधर वाई एक्सिस के साथ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रायंगल पे जब आप नजर डालेंगे तो उसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है? यस सर। Okay. Anyhow, we consider an infinite line charge. So let's say this is an infinite line charge. This is a line charge which is extending from minus infinity to plus infinity. Can you guys see the line? Yes, sir. Okay. So this is an infinite line charge, and we assume that the line charge density of the source is known, which is represented by rho s. और यहाँ पे एक point है, this is the point under observation. You guys want to calculate the intensity at this particular point. ये P है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा? You guys will have to consider, you see, the radial distance between the source and the point under observation. ये radial distance है। अगर आप लोग इस line पे नजर डालें, this line is perpendicular to the source. So you see, अगर आप लोग इस लाइन पे नजर डाल दे, this line is perpendicular to the source. समझ आ रही है? Yes, sir. This line is perpendicular to the source. तो source और point under observation के दरमियान एक ऐसी line आप लोग ड्रा करेंगे which is perpendicular to the source, and we represent this line by rho. So the electric field intensity at this particular point, due to the infinite line charge, depends upon three parameters. It depends upon the line charge density of the source. In other words, this electric field intensity is directly proportional to the line charge density of the source. By increasing the line charge density of the source, the electric field intensity will increase, right? Yes, sir. And by decreasing the line charge density of the source, the electric field intensity will decrease. So this electric field intensity depends upon the line charge density of the source. It depends upon the permittivity of the medium. You see, epsilon stands for the permittivity of the medium. ये source और ये point एक खास डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पड़े होंगे। तो अगर ये फ्री स्पेस में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर ये फ्री स्पेस के अलावा आप लोग किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो परमिटिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। So the electric field intensity depends upon the permittivity of the medium as well. If you increase the permittivity of the medium, the electric field intensity will decrease. So anyhow, it depends upon the permittivity of the medium as well. कि किस डायलेक्ट्रिक मीडियम में आप लोगों का सोर्स पड़ा हुआ है और ये पॉइंट पड़ा हुआ है। And it depends upon the radial distance between the source and the point under observation. याद रखें कि ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है, this distance is perpendicular to the source. इस लाइन को आप लोग इस तरीके से ड्रा करेंगे कि this line should be normal to the source. Anyhow, so it depends upon this particular distance as well. If you increase this distance, the electric field intensity will decrease, will increase. So the electric field intensity depends upon the radial distance between the source
and the point under observation. And definitely it will be directed along this particular line. So the ये जो electric field intensity है, it will be directed in this in the direction of this particular arrow, because a unit vector in this direction is represented by arrow. So this is how we calculate the electric field intensity at this particular point, which is caused by the infinite line charge. ये equation हमने derive किया था, and derivation जो है वो वीडियोस में मौजूद है. You guys Sir, need ये to understand. एक्सक्यूज मी सर, ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे हम, एंगल थीटा. एंगल सर हम विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे, एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ. आप सो रहे थे? नो सर, ये आपने न्यूमेरिकल में किया था तो आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लिया था. नहीं, आप सो रहे थे या जाग रहे थे? तो जाग रहा था. आप जाग रहे थे तो ये क्वेश्चन आपसे पहले भी किसी ने पूछा है, एंड आई रिस्पॉन्डेड टू दिस क्वेश्चन. इस थीटा पे अच्छी खासी डिस्कशन हो गई है. ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था ना, कौन था? जी मैं सर, मैंने पूछा था. आपने पूछा और मैंने आपको रिस्पॉन्ड किया ना? जी सर. हाँ, तो ये बंदा उस वक्त मेरे ख्याल में सो रहा था. इंटरनेट अनस्टेबल. अच्छा, इंटरनेट अनस्टेबल है. थीटा आपकी मर्जी है. थीटा आप जो है ना, मतलब उसी ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 के अलावा कोई भी एंगल आप थीटा कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन आपका परपेंडिकुलर और आपका बेस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा. अगर आपको मैथमेटिक्स की समझ आती है तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए. आपके पास अगर ये ट्रायंगल है, लेट्स से ये ट्रायंगल है आपके पास, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है. आप इसको भी थीटा का नाम दे सकते हैं, इसको भी थीटा का नाम दे सकते हैं. अगर आप इसको थीटा का नाम देंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा. अगर आप इसको थीटा का नाम देंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा. बात खत्म. सर जी, ये थीटा एंगल जो है ये दो टेल्स या दो हेड्स के दरमियान में लेते हैं, लेकिन ये जो हमने लेक्चर 8 किया है इसमें हेड और टेल के दरमियान में थीटा लिया हो. माशाल्लाह, ये हमने ट्रायंगल की बात की है, वेक्टर्स की बात नहीं की. तो सर जी ट्रायंगल भी तो वेक्टर से ही बनते. मैंने ट्रायंगल की बात की, मैंने वेक्टर्स के दरमियान एंगल की बात नहीं की, मैंने ट्रायंगल में एंगल की बात की है. ये वेक्टर्स कहाँ से आ गए? हमने ट्रायंगल को कंसीडर किया और ट्रायंगल में एंगल को कंसीडर किया और फिर उसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को कंसीडर किया और बेस को कंसीडर किया. बात खत्म. सही है सर. वेक्टर्स का जिक्र आप करते हैं जब आपको वेक्टर्स की जरूरत होती है. एंगल में मुझे वेक्टर की जरूरत नहीं थी, मैं ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा था और ट्रायंगल में मैंने इस इक्वेशन को लिखना था कि z बाय रो इज बेसिकली इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा. मैंने इस इक्वेशन को लिखना था, तो मुझे ट्रायंगल की जरूरत थी, मुझे ट्रायंगल में वेक्टर की जरूरत नहीं थी. ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती. ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप जस्ट जो है ना, मतलब लाइक बेस को कंसीडर करते हैं. यार ये माइक्रोफोन बंद करे प्लीज, माइक्रोफोन बंद करें. तो ट्रायंगल में जब ट्रायंगल में जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं आपको वेक्टर की जरूरत नहीं होती. समझ आ रही है? यस सर. अच्छा, so anyhow this is the electric field intensity जिसको हम डिराइव कर चुके हैं उस वीडियो में. and it depends upon, you see, the line charge density of the source. It depends upon the permittivity of the medium, and it depends upon the radial distance between the source and the point under observation. If I draw a line over here which is parallel to the source, I draw a line over here which is parallel to the source. You see, इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी. If you consider this point, the radial distance between this point and the source is rho. If you consider this point, the radial distance between the source and this point is rho. If you consider this point, the radial distance between the source and this point is rho. If you consider this point, the radial distance between the source and the point is rho. So इस लाइन पे आप लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी. इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी. ये बात हुई थी वीडियो में. एक और बात हुई थी कि अगर इस लाइन को मैं एक सिलेंडर के अंदर लेके आऊं, जैसे यहाँ पे एक सिलेंडर है, तो इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज को आई एम एनक्लोजिंग इन अ सिलेंडर.
और मैं इसको इस अंदाज से इनक्लोज कर रहा हूँ कि दिस लाइन इज लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. Yes, sir. If the source is located on the axis of the cylinder, तो आप लोग सरफेस पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी. The electric field intensity on the surface of the cylinder will be constant. उसकी वजह क्या है कि सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले, the radial distance between the source and the point will be constant. So if you enclose the source in a cylinder in such a way that the source is located on the axis of the cylinder, then the electric field intensity on the surface of the cylinder will be constant. So इसकी बात हुई थी the electric field intensity due to an infinite line charge. फिर बात हुई थी the electric field intensity due to an infinite sheet of charge. Let's say you guys have an infinite sheet of charge. This is a sheet which is extending from minus infinity to plus infinity in one direction, and then from minus infinity to plus infinity in another direction. And the surface charge density of the source is known, which is represented by rho S. So if you guys want to calculate the electric field intensity at the point under observation due to the infinite sheet of charge, this electric field intensity depends upon rho S, which is the surface charge density. And you know what is surface charge density? This is charge per unit area. समझ आ रही है? The surface charge density is what? This is the charge per unit area. This is the charge per unit area. So you guys can calculate it with the help of dq by ds or q by s. So if the surface charge density of the source is known, you guys can calculate the electric field intensity at any point due to an infinite sheet of charge. So it will be equal to rho s divided by 2 epsilon. So this is the permittivity of the source in which, this is the permittivity of the medium in which the source and the point under observation are located. अगर आप लोग इसको free space में रखेंगे, the electric field intensity will be maximum. Electric field intensity free space में maximum होगी क्योंकि वहाँ पे permittivity कम होती है. अगर आप लोग इस source को किसी दूसरे medium, dielectric medium में रखेंगे, intensity कम होगी depending upon the the permittivity of the medium. So the electric field intensity at any point will be equal to rho s divided by 2 epsilon. And then you consider a unit vector which is normal to the source. So we derive this particular equation. This is how we calculate the electric field intensity at the point under observation due to an infinite sheet of charge. इसमें distance बिल्कुल involved नहीं है. जब हम equation को derive करते हैं, this equation is independent of the distance. So आप लोग point source के करीब भी consider कर सकते हैं, and you guys can consider the point away from the source. It does not depend upon the distance. The electric field intensity at any point, चाहे वो source के करीब हो, चाहे वो source से दूर हो, it depends upon what? It depends upon density, charge density, the charge density and the permittivity of the medium. So we derived this particular equation as well, right? Yes, sir. Okay. So this discussion is related to chapter number 2. ये सारी चीजें मैं explain कर चुका हूँ वीडियोस Excuse में. me, sir. जी जी. सर इनफाइनाइट शीट ऑफ प्लान में जो हमारे पास वो ट्रायंगल बनते हैं वो भी राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गए ना? जी यस सर. बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल होगा. आपको नजर नहीं आता. यस सर, नजर नहीं आता. आपको नजर नहीं आता, उसकी वजह ये है, देखिए ट्रायंगल यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो हम डिफरेंट ले रहे हैं, और यहाँ पे वाई एक्सिस है. ठीक है जी. एक्स एक्सिस पे पॉइंट अंडर ऑब्जर्वेशन था, समझ आ रही है कि नहीं? यस सर. यहाँ पे पॉइंट अंडर ऑब्जर्वेशन था. सो यहाँ से यहाँ पे एक स्ट्रिप हमने कंसीडर किया था, एंड यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रा की थी. तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन वहाँ पे 3 डायमेंशनल चीजें, तो आपको नजर नहीं आता कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन वो ट्रायंगल जो है दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? यस सर. थैंक यू सर. ओके जी. सो
Then we talk about, you see, the electric flux density. So we talk about the electric flux density, and we know that electric flux density is basically the flux per unit area. The flux per unit area. So if you guys have a point charge, let's say we have a point charge, and the position vector of this point charge is represented by R1. And I have the point over here, and the position vector of this point is represented by R. And this is the vector which extends from the source to the point under observation. And let's say I represent this vector by R. ठीक है, और इसके साथ जो unit vector है, that is represented by AR. So if I want to calculate the electric, sorry, this one is R. This one is R1 and this one is R. This one is R, this one is R1. Source का जो position vector है R1, point का जो position vector है, that is R. So if I want to calculate the electric flux density, at the point under observation, due to the point charge, so we can calculate it with the help of this mathematical relationship. Electric field intensity हमने calculate की थी. You know how to calculate it. I am not going to talk about the electric field intensity again and again. I will talk about the electric flux density only. So we can calculate the electric flux density at this particular point, either with the help of this particular equation. I have Q divided by 4 pi epsilon R square multiplied by AR. This is equation number 1. इसमें सिर्फ नीचे epsilon नहीं है, sorry. यहाँ पे epsilon अगर आएगा, then it will be electric field intensity. So यहाँ पे unit vector AR है. So this is the electric field intensity at this particular point, which is caused by this charge. We can use another equation as well. I can use this particular equation as well. I have Q multiplied by R divided by 4 pi epsilon R cube. So I can calculate the electric flux density at this particular point, which is caused by this source, with the help of this equation as well. इन दोनों इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं है. इन दोनों इक्वेशंस में बिल्कुल फर्क नहीं है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि we know that AR is basically equal to R by R. इन दोनों इक्वेशंस में बिल्कुल फर्क नहीं है. और अगर आप लोग ज्योमेट्री पे नजर डाल दें, so this AR will be equal to R minus R1 divided by the magnitude of this vector, which is R minus R1. This is the magnitude. So anyhow, we can calculate the electric field intensity either with the help of this particular equation or with the help of this particular equation. या इसी equation को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं. I have Q into R minus R1. We have R minus R1 divided by 4 pi. इसमें भी एप्सिलॉन नहीं है यार, आप लोग सो रहे हैं. यहाँ पे भी एप्सिलॉन नहीं है और यहाँ पे भी एप्सिलॉन नहीं है. I have 4 pi and then I have R minus R1 raised to power 3. So we can calculate the electric flux density at this particular point either with the help of this equation or this equation or this equation. आप लोग मेरे साथ? Yes sir. Yes sir. कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ? 41 स्टूडेंट हैं. 41 फिलहाल मौजूद है क्लासरूम में. ठीक है जी, ठीक है. तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? No sir. No, sir. मेरे ख्याल में 40-41 के करीब जो स्टूडेंट्स वीडियो देख चुके हैं, बाकी सो रहे हैं. 40-41 के करीब स्टूडेंट्स मतलब वीडियो देख चुके हैं और बाकी सो रहे हैं. प्लीज आप लोग वीडियो देखें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं चैप्टर नंबर 4 के वीडियोस को भी अपलोड करूंगा.
हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं मिड टर्म से पहले। आप लोग वीडियोस बिल्कुल नहीं देखते, मैं देखता हूँ कि कितने व्यूज आ चुके हैं उसके ऊपर। तो काफी कम बच्चों ने अभी तक ये देखा हुआ है बाय द वे video. Anyhow, then we calculate the electric flux density due to a line charge. हम क्या करते हैं? Electric flux density due to line charge. We calculate the electric flux density due to a line charge. So what we do, we consider a line charge. We consider a line charge, and we assume that the line charge density of the source is known. What is line charge density? The charge per unit length. So if I want to calculate the electric field intensity at this particular point, so इस point पे electric field intensity calculate करने के लिए what I do, I consider a very small portion of the line. The length of the small portion is dl. The magnitude of the charge on the small portion is dq. And then we consider the position vector of the small portion, which is represented by r1. We consider the position vector of the point under observation, which is represented by r. And then we consider this particular vector. This vector is extending from the small portion of the source to this point. And this vector is represented by r minus r1. Okay? So the electric flux density at the given help for this particular integration, we have the integration of rho L dl into r minus r1. R minus r1 is a vector which extends from the small portion of the source to the point under observation by 4 pi r minus r1 raised to power 3. So we use this integration to calculate the electric flux. We use this integration to calculate the electric flux density at this particular point. इस इक्वेशन को बाकायदा हम डिराइव करते हैं इस इक्वेशन की मदद से। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की हुई है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, और उस इक्वेशन को कंसीडर करें, उस इक्वेशन को एप्सिलॉन से ज़रब दे, आप लोग के पास डी आ जाएगी। So basically this one is a well-known relationship between the density and the intensity. तो चैप्टर नंबर 2 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं और चैप्टर नंबर 3 में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद if we consider a surface charge, we assume that the charge is uniformly distributed over this particular surface, and we assume that the surface charge density of this particular source is known. This charge is uniformly distributed over this particular surface. The surface charge density of the source is known. This is the small portion of the source जिसका एरिया ds है और जिसके ऊपर चार्ज की तादाद कितनी है, चार्ज की मकदार कितनी है, that is dq. So if you guys want to calculate the electric flux density at this particular point, which is the flux per unit area, the electric flux per unit area, जिसका यूनिट है कूलम पर स्क्वायर मीटर. So exactly इसी इक्वेशन में हम चेंजेस करते हैं. So you see the electric flux density will be equal to the integration of rho s ds into r minus r1 by 4 pi r minus r1 raised to power 3. So if you have a surface charge, you guys can calculate the electric flux density at this particular point with the help of this particular integration. और याद रखें ये एक सिंगल इंटीग्रेशन नहीं है. जब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ईएमएफ काफी मुश्किल कोर्स है, यहाँ पे डीएस इन्वॉल्व है, which is differential area. Differential area is always in terms of two variables, dx dy, dy dz, dx dz. So यहाँ पे आप लोग के पास दो वेरिएबल्स होंगे. You guys will have to integrate it with respect to those two variables. आप लोग के पास डबल इंटीग्रेशन आएगा.
ये इंटीग्रेशन बेसिकली आप लोगों को सिंगल इंटीग्रेशन नजर आ रहा है, लेकिन ये सिंगल इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें एरिया इन्वॉल्व है. इट विल बी डबल इंटीग्रेशन. आर यू गाइस हियरिंग मी? यस सर. यस सर. या मैं हवा में तकरीर कर रहा हूँ? नहीं सर. यस सर, हम सुन रहे हैं. वेरी No, गुड, sir. आप लोग सुन रहे हैं. अच्छा, तो उसके बाद जो वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम चार्ज. So what we do, we assume that the charge is uniformly distributed in a volume. आप लोग के पास चार्ज वॉल्यूम के अंदर है. वॉल्यूम या रेक्टेंगुलर बॉक्स की शक्ल में है, या सिलेंडर की शक्ल में है, या फुटबॉल की शक्ल में है, स्फीयर की शक्ल में है. तो एक स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर चार्ज है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर चार्ज है. So if the charge is uniformly distributed in a volume, you guys need to know the volume charge density. What is the volume charge density? This is the charge per unit. Volume. Charge per unit volume. So हम क्या करते हैं? We consider a small portion of this volume. The volume of the small portion is represented by dV. The magnitude of the charge inside the small portion of the source is represented by dQ. So you guys can calculate the electric flux density at this particular point. Chapter number 2 में we calculate the electric field intensity. So chapter number 2 के electric field intensity को permittivity से सरब दे, आप लोग के पास electric flux density आएगी. So what we do now, we replace this by rho v dV. So this integration will give you the electric flux density at this particular point. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन लिखे डिनोमिनेटर में. अगर डिनोमिनेटर में आप लोग एप्सिलॉन लिखेंगे, आप लोग के पास इंटेंसिटी आ जाएगी. द इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज. तो इंटेंसिटी की ऑलरेडी बात हो गई थी. जस्ट मल्टीप्लाई द इंटेंसिटी बाय परमिटिविटी एंड यू गाइस गेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. Anyhow, this is how we calculate the electric flux density at this particular point, which is caused by a volume charge. Now this integration is triple integration because we have dV, and you know that dV in the rectangular coordinate system is dx, dy, dz. So you guys will have to integrate it with respect to x, with respect to y, and with respect to z. So this integration will be triple integration. Similarly, if you consider differential volume in the cylindrical coordinate system. So in the cylindrical coordinate system, we have rho, d phi. We have rho, d rho, d phi, dz. and dz. Right. So you guys will have to integrate it with respect to rho, with respect to phi, with respect to z. So it will be triple integration. And similarly, if you guys consider the differential volume in the spherical coordinate system, it will be in terms of 3 variables. So ये single integration नहीं है, this is triple integration. Anyhow, this is how we calculate the electric flux density due to what? Due to Volume charge. volume charge. सर जी, चैप्टर 3 की प्रॉब्लम आप अपलोड करेंगे एग्जांपल? देखिए, चैप्टर 2 नन से कम नहीं वड़ू के शांति वीडियो दा अमा वक्ती रिकॉर्ड कर हम अपलोड न का आई के कम दिन मंग स्फेरिकल चार्ज कंसीडर कर दे और द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन मो कंसीडर कर दे कना जी. अब बस अपलोड कमा और इंशाल्लाह सबा पूरी बजता न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपलोड कमा. हां Yes sir. यस सर, दा वॉल्यूम वाला बगे सर जी और न्यूमेरिकल अपलोड के कम वॉल्यूम वाला लका वॉल्यूम दा उसम से कम टॉपिक को कुछ पदी पत्र का सॉल्व कीगी जिसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन है. जिसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, वो बेसिकली एक एग्जांपल है which is like to find out, you see, the charge, the total charge in a volume. So anyhow, I will see कि उसको मैं फिलहाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. राइट? Yes sir. यस सर. ओके. मैं देखूंगा कि मेरे पास न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में है कि नहीं है. जो मेरी अपनी किताब है उसमें अगर हो, so definitely I will explain the numerical examples of my book. Right? Yes sir. Okay ji. So then we talk about
then we talk about the electric flux density due to infinite line charge. So if I have infinite line charge, we discussed the electric field intensity due to infinite line charge a while ago, right? Yes, sir. And we discussed that the electric field intensity at the point under observation due to an infinite line charge depends upon the density of the source, line charge density. It depends upon the permittivity of the medium. 2 pi E epsilon. And it depends upon the radial distance between the source and the point. So, and this will be in the direction of the unit vector arrow. So this is how we calculate the electric field intensity at a point which is caused by Infinite line of charge. which is caused by an infinite line of charge. So we know the relationship between the electric flux density and the electric field intensity. If I multiply the electric field intensity by the permittivity of the medium, what will I get? The electric flux density? Epsilon कट जाएगा. So यहाँ पे epsilon कट जाएगा. So this is how we calculate the electric flux density due to infinite line charge. Okay? Yes, sir. Then we talk about infinite sheet of charge. We talk about the electric flux density due to infinite sheet of charge. So you see, we discussed the electric field intensity at the point under observation, which is caused by an infinite sheet of charge. We know that the intensity at a given point, which is caused by an infinite sheet of charge, depends upon the surface charge density of the source. What is surface charge density? This is the charge per unit area. Yes, sir. Right? So it depends upon the Yes, surface charge density, and it depends upon the permittivity of the medium as well. सोर्स आप लोग जिस मीडियम में रखेंगे उस मीडियम पे भी इंटेंसिटी डिपेंडेंट है. अगर आप लोग फ्री स्पेस में रखेंगे सोर्स को तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. अगर इफ यू गाइस विल प्लेस इट इन एनी अदर मीडियम द इंटेंसिटी will be less than the intensity in the free space. So सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे होगी? Free space. फ्री स्पेस में. फ्री स्पेस में क्योंकि फ्री स्पेस में परमिटिविटी कम होती है, राइट? Okay. So this is how we calculate the electric field intensity. आपके क्वेश्चंस को बेटा मैं जवाब देता हूँ. Let me just write down this equation, then I will give you time to respond to your questions. Okay. So this is how we calculate the electric field intensity at a given point. This is a unit vector which is normal to the sheet. Let's say this is an infinite sheet of charge. ये आपको नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और लेट्स से पॉइंट इस तरफ है, मेरे हाथ की तरफ है, यहाँ पे पॉइंट है, मतलब पॉइंट जो है वो आप लोगों की तरफ है, पॉइंट अंडर ऑब्जर्वेशन आप लोग की तरफ है. समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर पॉइंट आप लोगों की तरफ है तो आप लोगों ने यूनिट वेक्टर को पॉइंट की तरफ कंसीडर करना होगा, अपनी तरफ कंसीडर करना होगा. समझ आ रही है? द यूनिट वेक्टर which is normal to the sheet, लेकिन this unit vector will be towards you guys. It will be towards the point under observation. समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर पॉइंट इस साइड पे हो, बैक साइड पे, so you guys will have to consider a unit vector in this direction which will be normal to the sheet. समझ आ रही है? Yes, sir. So you guys will have to consider a unit vector which is normal to the sheet. लेकिन कैसे कंसीडर करेंगे आप लोग? It depends upon the point. पॉइंट शीट के एक साइड पे भी हो सकता है और
दूसरी साइड पे भी। दूसरे साइड पे भी हो सकता है. So you guys will have to draw a unit vector from the sheet towards the point. Anyhow, this is how we calculate the electric field intensity at the point under observation due to an infinite sheet of charge. So if you guys want to calculate the electric flux density, इंतहाई आसान काम, multiply the intensity by the permittivity of the medium, और आप लोग की यहाँ पे permittivity से जान छूट जाएगी. And this is how you calculate the electric flux density due to an infinite sheet of charge. So chapter number 2 में electric field intensity की बात हो रही है. Electric field intensity due to a point charge, electric field intensity due to a line charge, electric field intensity due to a surface charge, electric field intensity due to a volume charge. Then electric field, माइक्रोफोन को बंद करें. नारस ये क्या कह रहे हो यार, इसको इस तरह करें कि इसको लात मारे और इसको कमरे से बाहर निकाल दें. अच्छा, then electric field intensity due to an infinite line charge, then electric field intensity due to infinite sheet of charge. फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ. चैप्टर नंबर 3 में instead of electric field intensity we talk about electric flux density. Both of them are vector quantities, both of them are in the same direction. जो electric field intensity का direction होगा वही direction इस vector का भी होगा. So it's a vector quantity and this is electric flux per unit area, जिसका unit coulomb per square meter है. So we calculate the electric flux density due to a point charge. Then we calculate the electric flux density due to a line charge. Then we calculate the electric flux density due to a surface charge. Then we calculate the electric flux density due to a volume charge. Then we calculate the electric flux density due to infinite line charge. Then we calculate the electric flux density due to infinite sheet of charge. इसके बाद 2 टॉपिक्स थे. तो उन 2 टॉपिक्स को सुबह में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले इनको डिस्कस कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह I will upload that video today और इंशाल्लाह tomorrow इसके numerical questions आ जाएंगे. और next week जो है मैं I will be busy in the interviews of the ECC NEET based scholarship, लेकिन शाम को इंशाल्लाह फारिग होके मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा और चैप्टर नंबर 4 को अपलोड करने की कोशिश करूंगा. And then inshallah weekend pe we will talk about, you see, the topics of chapter number 4 and the numerical questions of chapter number 4 as well. So inshallah next week में कोशिश करते हैं कि chapter number 4 को हम cover कर सके और इसके numerical questions को भी cover कर सके. ठीक है? Yes sir. Now I am available for your questions. कोई बंदा क्वेश्चन पूछ रहा था? नो क्वेश्चन सर. नहीं, कोई बंदा था जो क्वेश्चन पूछ रहा था. when I was writing this particular question, he was asking a question और मैंने उससे कहा कि मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दे, then I will respond to your question. जी, कितने स्टूडेंट्स हैं? 35 जी 35 सर जी. 35 के करीब है. बस ये 35 है जो वीडियोस भी देख चुके हैं मेरे ख्याल में. बाकी लोग जो है न किताब पढ़ते हैं, न ऑनलाइन डिस्कशन अटेंड करते हैं, न वीडियोस देखते हैं, न उनकी कोई परवाह है कि हमने किसी चीज को समझना भी है. सर जी वो कहते हैं ऑनलाइन पेपर है, वैसे भी बुक है पास. अच्छा, तो पेपर हो जाएगा. यस सर. सर पेपर हो सही मुश्किल पेपर बनाए, सही मुश्किल पेपर बनाया. नहीं पेपर की मुश्किल की बात नहीं है, जिसने पढ़ लिया उसको मुस्तकबिल में काम आएगा. ग्रेड क्या है यार, अब तुम सर पे मुश्किल पेपर. नहीं, जो नहीं पढ़ते उनका ग्रेड नहीं आना चाहिए. यस सर. एग्जाम्पल यस पेपर बना रहे होते हैं. हाँ ना, ये जो बच्चे पढ़ते हैं मतलब उनको क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं,
टाइम दे रहे हैं, मतलब लाइक वीडियोस भी देख रहे हैं, किताब भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस भी अटेंड करते हैं, तो उनको फायदा तो होना चाहिए ना। यस सर। यस सर इधर अटेंडेंस लिया करें जो सेशन लेते हैं, तो इससे भी पता चल जाएगा। नहीं, वो इस तरह है कि इंशाल्लाह आखिर में का मैं नहीं, आखिर में मैं पता है क्या करूंगा, आखिर में मैं वाइवा अरेंज करूंगा। यस सर, ये बहुत अच्छा। यस सर। वो मैंने BEE में वाइवा अरेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन ये है कि मतलब मैं EMS में वाइवा अरेंज करूंगा और मैं पूछूंगा आप लोगों से इन क्वेश्चंस के बारे में। जो नहीं पढ़ना चाहते बेशक ना पढ़े। यस सर। यस सर। यस सर, इस तरह ग्रेड की भी जरूरत पड़ेगी। सर फाइनल तो इंशाल्लाह ऑन कैंपस होगा ना? जी फाइनल कैंपस में होगा ना सर जी? फाइनल मुझे नहीं पता, इंशाल्लाह मंडे। क्योंकि मुझे नहीं पता कि फाइनल कैंपस में होगा या ऑनलाइन होगा। ये तो डिपेंड करता है जो हमारी अथॉरिटी है, इसमें डीन्स इन्वॉल्व है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, वाइस चांसलर इन्वॉल्व है, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन सर सो फार आई डोंट नो। सर आप इन्फॉर्मेशन ना बताइए, आपने पोस्ट किया था, पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या लिखा था, ना बताए तो ठीक ही होगा ये। सर ये आपकी वो होता है पोस्ट हमें अभी भी याद है सर, ड्यूटी कन्फेशन में। जी। अच्छा, आपको पता है कि मैं स्कॉलरशिप के बारे में पोस्ट अपलोड करता हूँ कि सेक्शन 2019 एंड 20 इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो बच्चों को उसकी भी समझ नहीं आती, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम तो 2018 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आए थे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म हमने 2020 में दिए थे, तो अब हम इंटरव्यू के लिए ना है। खुदा के बंदे, यू डोंट नो कि व्हाट इज सेक्शन 1920 और व्हाट इज सेक्शन 2021। सर वो छोटे हैं ना, अभी अभी नए नए आए। सर ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, रिकॉर्डिंग स्टॉप।